नॉलेज एट हॉरिजॉन्टल वॉच में आपको वार्म वेलकम। अब्दुल मजीद बानिया हाजिर है नई वीडियो लेकर। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है कॉन्सोनेंट लेटर डी। किन साउंड्स में इसको प्रोनाउंस किया जाता है डिफरेंट कम्बिनेशन में, और कहाँ पर ये साइलेंट होता है, कौन से इसकी एक्सेप्शंस हैं। डी in fact is a voice letter. It is always pronounced as D if it occurs at the beginning of word. Dead, doll, defend, or it occurs in medieval position and middle of any word as defended, melodious, or it occurs at the end of word as sold, told, rolled, or etc. But this letter before the letter G is not sounded. ये अपनी आवाज खो देता है। जैसे आप ब्रिज की बात करें, आप नॉलेज की बात करें, तो जी से पहले डी साइलेंट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से वर्ड लाइक सोल्जर एंड प्रोसीजर, इन वर्ड्स में ये जा साउंड प्रोनाउंस करता है। इसको हम जस्टिफिकेशन ये देंगे, वॉवल डबल हैं, या तो कंसेक्टिवली डबल हैं या वन बिफोर एंड वन आफ्टर दैट एज इन प्रोसीजर। तो ये तो थी लेटर डी की कुछ स्पेलिंग्स, साउंड प्रोडक्शन। फूड फॉर थॉट आज के लिए ये है। Noun is the name of person, place or thing, but I define it. Noun is the name of every existence in this universe. It is in physical shape or non-physical shape. But if it exists, you have to consider this as food for thought, and we will discuss it later in next videos. Okay, bye.